He has been holding the camera all this while. There's no way he can put his hand and do that. True. So that happened, and I'm like, what did happen to you? Because I've been triggering. These both are digging, and we know the place, the history, and the psychic readings. So it affected you. As it happened, did you smoke now? And like, how did you know? I'm like, dude, the spirit told me right now with your body's reaction. And like, yeah, I did This because never I was feeling happened. very This never tired and all, happened. so I had to Okay. do that. Hello guys, welcome to the Haunted Show. Today we have as our guest is a freelance paranormal expert, Mr. Shiva Mohan. Uh, so, Mr. Shiva, I would like to know in this video that why are you a freelance paranormal experts? Like in many movies or even in fiction films or series or even in this community, as we have called out a lot of people as our guest, they all work in teams. So everyone has some team. So there must be a pair of like 2 people, 4 people, or 6 people working together, and they have a group of people who they go and investigate things. तो आप यहाँ पे like अकेले कैसे काम करो? ऐसा भी होता है क्या, like where you work as a freelance paranormal expert, or your previous experience where you work with someone as a team, और कैसा है, like have you done that kind of? देखो, जब भी व्हेन यू स्टार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 2011 में आई स्टार्टेड, मेरा स्टार्ट पैरानॉर्मल फील्ड में या फिर पैरासाइकोलॉजी में बोल सकते हैं कि 2011 के आसपास हुआ. देन लेटर ऑन आई एक्यूमुलेटेड द नॉलेज, सब क्या है क्या नहीं है ये सब जाना. 2018-19 के आसपास आई टोल्ड यू आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके साथ मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता था. We used to investigate places, we used to go to certain cases also, which we used to take up as a team and then solve. Yeah. तो ऐसे काफ़ी सारे मतलब I have worked with a team, but the thing is, see, when you work with a team, there is always a notion of see, okay. तो पहली बात ऐसा होता है कि there is a point of view, okay. Now there are multiple point of views. अभी एक ग्रुप है, एक टीम है, तो उसमें देयर विल बी 4 to 5 पॉइंट ऑफ व्यूज. अभी जो आपको दिख रहा है, जो आपको समझ रहा है, जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी वही दिखे और वही समझे. देन व्हेन यू आर नॉट अबाउट टू अंडरस्टैंड, जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है, एंड व्हेन यू टेंड टू क्वेश्चन, एंड जब सामने से कुछ जवाब नहीं आता फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन पीपल टेंड टू इग्नोर यू जस्ट बिकॉज यू हैव सम क्वेश्चंस which are already being answered by people of the same team, like higher जो है वो लोग आंसर कर रहा है. बट देन अगेन, जैसे कि मैंने बोला कि हर एक इंसान का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एंड एज ए टीम हर एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू लेके उस पर वर्क करके आगे बढ़ना इज अ थिंग दैट एक टीम को टीम बनाती है. दैट्स व्हाट मेक्स अ टीम टीम. सो बीइंग इन ए टीम, आई अंडरस्टूड कि इफ यू वांट टू know the absolute truth of something without being manipulated or without having a filter of emotion or anything else, then you will have to step out. Because देखो, रिसर्च, पैरानॉर्मल फील्ड में रिसर्च करना इज नॉट अ वेरी सिंपल गेम. आप कीचड़ में हाथ डालते हो तो सब पे कीचड़ उड़ता है, बिकॉज तुम ऐसी चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, ऐसी चीज़ों के ऊपर तुम बात कर रहे हो जिसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस नहीं है, या फिर जो दिखता नहीं है, तो हम उस पर मानू कैसे, ये एक थॉट उसके पीछे है. सो यू कांट ऑलवेज बी क्लीन इन इन्वेस्टिगेटिंग, या फिर यू कांट ऑलवेज बी क्लीन इन रिसर्चिंग. आप हाथ डालोगे, यू विल हैव टू गो टू प्लेसेस विच आर बीइंग लीगली रेस्ट्रिक्टेड, विच जहाँ पे तुमको उड़ी मार के जाना पड़ेगा, तब जाके ही तुमको सच्चाई समझेगा. द थिंग आई सेड, द रियलिटी बियॉन्ड द ट्रूथ, वो समझने के लिए तुमको कीचड़ में हाथ डालना पड़ेगा. एंड एवरी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे होता है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ देयर ओन एथिक्स, राइट. सबका खुद का एथिक्स होता है, सबका खुद का रूल्स होता है. सो व्हेन यू आर नॉट एबल टू फिट इन टू सच अ कैटेगरी, देन यू प्रीफर वर्किंग अलोन, राइट. जब तुम रिसर्च कर रहे हो, देयर इज़ नो वन टू टेल यू कि ये पॉइंट के बियॉन्ड मत जा, या फिर ये पॉइंट के बियॉन्ड बात मत कर, या फिर ये पॉइंट के बियॉन्ड एक फ़िल्टर डाल. ये वाली एक बात आ जाती है. सो आई एम नॉट मच ऑफ दैट पर्सन. So that's the reason I started freelancing,
and I moved out and started freelance. Abhi parapsychology mein freelance investigator, freelance researcher is a thing jo you are just researching about things. You need a small team, you can go anywhere. That team does not need to be मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे एंथुसियास्ट है, बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है ये टॉपिक पे एंड ये स्टडी पे. तो you can find people from all over while researching. When it comes to investigating, see, there are some basic things जो अपने को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम जाते हो, वो जगह टूटा फूटा हो सकता है, वो चीज़ आप पे गिर सकता है, बहुत सारे रिस्की. It's a risky business. It's a very risky business. If you're going alone, the risk multiplies. But I'm willing to take that risk because truth is all that matters. The reality is all that matters. So Makes sense. That's Makes sense. So recently, we saw a video on BeerBiceps where there was some incident that has happened with you. So I would like to show you the video. Can you tell me like what exactly happened with you in that situation? sure, why not? So I don't drink, I don't smoke. Pooja doesn't drink, doesn't smoke, because we are very sure that anything that is bringing down your consciousness is making you vulnerable to get affected by not just human beings but also spirits. So we make sure no drinking, no smoking, or whoever does it in our team, we make sure 2 days before investigation you are not drinking, you're not smoking. Keep your body clean. Yes, clean, and just meditate. That's what you do. Wow. And you've seen this happen where someone who's a drinker or a Oh smoker. yeah. It happened in Matheran. One of our guys, he is not with us right now. He has some personal work to carry out right now. Oh, thank God. I thought. Then he's getting married and all. Okay. So we went to Matheran to investigate this church. So that's me coming up now. Okay, so we went to Matheran to investigate this. You've been to Matheran, right? Yeah. Have you felt anything different when you enter Matheran? It was very long ago, but I definitely felt a sense of isolation. That this place is isolated, not just because it's that far up and you have to take those horses and go, Yeah. but there's just some deeper layer of isolation there. Yes. Like maybe it's spiritually isolated or something, Yes, dude. I don't know what yes. it is. It's very true, because the moment we went for the first time to Matheran, we entered and we're like, we came somewhere. This is something else. The vibes are also different. I think when you go now, whenever you go, I think you feel it more strongly. Yeah, I was a kid that time. Yeah. But I know what you mean. And it's also Yeah. some of the most beautiful forest pathways I've seen Yes. anywhere in India. That's all I Yeah, remember. That yeah. beautiful forest, Yeah. but deep level of isolation. I felt like I was just with my friends Correct. and very cut away from family, very Yeah. cut away from society. It's very different. Very, very the vibes are very different, yeah, from Matheran. I think it's one of our favorite There's a places, place but, you just to give went, you a right? brief of what Yes, happened to yes, one of our ex-crew guys. He was with us and we were investigating this church. And Pooja and Savio found something in one of the spot, and they were digging quite literally because they felt there's something underground that they have to figure out. And I'm like, what are you going to get? It's like, it's been so many years. So I'm being that skeptic, I'm like, and I'm a guy who will be skeptic in the beginning, but when I start seeing things, start proving things, so I'm always open like that. But in the first reaction, I'll be like, what will you get there? There's no point, because it's been so many years that church has been lying abandoned, like for 400 years now. And they both are like, no, there was a murder that was committed here and something like that. And the one of our guys, he was recording. And when they were digging, I could, like I said, I'm noticing everything that is happening right now. I noticed that this guy is doing something like, he's like very, very discomfort. And I'm asking Shiva, you're all fine? Because of course, when you go to Matheran to sit those rickshaws or horse, and not everyone has that experience to sit on those things. So it can act on your body, show on your body. And I'm like, are you fine? He's like, yeah, I'm fine. I'm like, okay. And then, so as I'm asking, they're stopping their digging wala part and they are listening to him what he's saying. And I'm like, yeah, you guys please continue. And then they again started digging, and again I'm seeing he's reacting to something. And I'm like, are you sure I'm fine? He's like, I think I'm tired. That's what it is. Like he was moving. He's moving his Okay. shoulders and all, like his back is aching or something like that. So the third time they went on to dig, he is like shouting now in pain. And he's like, Sarba, yaar, I cannot handle this pain. It's aching right now. I'm like, what the hell happened? You're all fine like 2 minutes back. He, no, something is happening right now. I kind of figured out that it's something to do with the digging. So I asked Pooja and Savio, continue digging. They start digging. He starts reacting again more. I'm like, stop. And he's fine.
And I dig again, and he's again reacting. So I'm like, there's something that is doing something to you. And he's like, Sabba, I'm feeling this burning sensation here. So he was wearing this hoodie which has no chain. I have to like completely remove the hoodie to figure out. So somewhere or the other, we had to lift, and we saw this scratch mark on his back. That is what he was reacting to. So Shiva, what Yeah. happened exactly? What is this scratch marks? What happened exactly at this situation? So, okay. So first of all, I would like to go back to Matheran. Okay. And then before going to Matheran, actually at that point of time, I was going through something like going through I think a financial crunch or something. और वो टाइम पे मैंने एक कॉर्पोरेट में जॉब करने को चालू कर दिया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग सो दैट आई कैन गो फॉरवर्ड विथ माई अभी हर एक इन्वेस्टिगेशन में जाने के लिए भी आपको एक्सपेंसेस पे करना पड़ता है आउट ऑफ योर ओन पॉकेट हर एक इन्वेस्टिगेशन में आउट ऑफ योर ओन पॉकेट बी इट इन ऑर्गेनाइजेशन और नॉट you will have to pay for the expenses of your investigation because it's you who want to know. Right. तो वो भी एक ज़रूरी था मेरे लिए तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट एंड वहाँ पे नाइट शिफ्ट था सो व्हाट हैपेंड वाज ये दिस इन्वेस्टिगेशन इन माथेरान इज हैपनिंग ऑन अ सैटरडे एंड फ्राइडे को 8:30 टू मॉर्निंग 5:30 का शिफ्ट था मेरा तो शाम को फ्राइडे को शाम को 8:30 को मेरा शिफ्ट चालू होता है रात को सुबह 5 बजे 5:30 बजे को मेरा शिफ्ट ख़त्म होता है एंड फ्रॉम देयर आई डायरेक्टली गो टू Matheran. no this people's house and from there we all together go to Matheran. Right. Now all this while I have not slept. Okay. And just a day before that मैंने घर शिफ्ट किया था एंड घर के अंदर फैन का इंस्टॉलेशन लाइट का इंस्टॉलेशन पाइप का इंस्टॉलेशन ये सब करने के लिए लोग आए थे तो आई डिडंट स्लीप Right. सो आई जस्ट कम्प्लीटेड मतलब थर्सडे रात को 8:30 बजे को मैं शिफ्ट में गया आई केम बैक ये पूरा दिन मेरा काम गया हार्डली 10 मिनट्स 15 मिनट्स में आई वुड हैव टेकन अ नैप अगेन उसके बाद वापस 8:30 बजे को शिफ्ट खत्म हो चालू होके 5:30 बजे को ख़त्म होके नाउ यू हैव टू थिंक कि मैं 2 दिन पूरा सोया नहीं है एंड देन आई वेंट देयर फ्रॉम देयर वी वेंट टू माथेरान जाने के बाद भी सी व्हेन यू गो टू माथेरान इट्स नॉट easy to reach to the Matheran जो नीचे का एक पार्ट रहता है and then you have to either go by a train or you have to climb. So we chose to climb because we were like ज़्यादा bags नहीं है कुछ नहीं है तो we chose to climb हम लोग सब लोग ऊपर गए. Now by that time I am pretty tired because I have not slept for 2 days. I have not eaten anything till that point of time. So I'm pretty tired. And we went over there. थोड़ी देर हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया ऊपर जाने के बाद कि क्या है क्या नहीं है एंड हम लोग थोड़ा लंच कर लेते हैं लंच करने के बाद वी हायर आई थिंक इट्स अ मैन इट्स अ कार्ट पुल्ड बाय अ मैन एक बंदा जो कार्ट पुल करता है वैसे हम लोग ने 4 या 5 कार्ट हम लोग ने मंगाया एंड वी वेंट जहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन जो चर्च के बारे में मेंशन हुआ वो चर्च में हम लोग गए वी वेंट ओवर देयर नाउ बाय दैट टाइम मैं तो ऑलमोस्ट वो कार्ट के अंदर भी मैं ऑलमोस्ट नींद के झपकी में ही था क्योंकि नींद उतना ज़्यादा आ रही थी एंड बॉडी वॉज वेरी टायर्ड ओके नाउ आई वॉज एनर्जेटिकली लो एज ही मैंने एनर्जेटिकली लो था स्टिल आई वॉज ऑन एन इन्वेस्टिगेशन इन द टीम सो आई वेंट ओवर देयर एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड जस्ट लाइक यू मेंशन पूजा एंड सैवियो नीचे बैठ के दे स्टार्टेड डिगिंग एंड जैसा उन्होंने डिग करने को चालू किया सो बिफोर अभी जैसे इन्वेस्टिगेशन चालू होता है व्हेन वी रीच टू अ लोकेशन हम लोग पहले रेखे करते हैं हम लोग चारों बाजू जाके देखते हैं कुछ खड्डा तो नहीं है जिसमें हम लोग अंधेरे में गिर जाए या फिर कोई ऐसा जगह नहीं है ना जहाँ पे हम लोग स्टम्बल हो जाए या फिर कोई ग्रेव नहीं है जिसके ऊपर गलती से हम पैर रख दें ये सब देखने के लिए हम लोग एक राउंड मारता है पूरा हम लोग ने पूरा राउंड मारा उसके बाद जहाँ था वहाँ पे आने के बाद द साइकिक्स डू दर रीडिंग लिया तभी सैवियो भाई वॉज रीडिंग एंड ही केम टू मी एंड ही टोल्ड मी कि यहाँ पे जो भी था आई थिंक दैट पर्सन whoever got murdered here whoever the father priest whoever it may have resemblance of how you look Okay. how I look Okay. now ये statement सावी भाई ने बताया था आई थिंक इन सबके सामने बताया था या मुझे बताया आई थिंक एवरीवन मस्ट हैव हर्ड उन्होंने ये स्टेटमेंट बताया था कि सम लाइक काइंड ऑफ ये बंदा जो है ही लुक्स लाइक यू Okay. now that was point 1 now this conversation ends now I'm recording and Savio and Pooja are digging and जैसे वो डिग करने को चालू करता है
feeling a small pain in my back. तो मुझे आई डाउट कि ये पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो नींद नहीं हो. नाउ देर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स रनिंग इन माई माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ये बैक एक हो सकता है, ये कोई स्पिरिट अटैक हो सकता है, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड है, Right. डिहाइड्रेटेड है मैं, ये सब चीज़ें हैं मेरे अंदर. एंड उसके बाद इतना ज़्यादा ट्रैवल करके वी ट्रैवल फ्रॉम नियर टू देयर, एंड देन उसके बाद भी वो सुनने को इट इज़ वेरी इजी कि समवन इज पुलिंग अ कार्ट एंड यू आर सिटिंग बिहाइंड बिंदास, बट देन माथेरान का रास्ता इट्स नॉट पक्का रास्ता, पूरा कच्चा रास्ता है, वो हर बार दूसरी बार में टक 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 गिरते रहता है. तो उसमें भी ट्रैवल करके तुम जाते हो तो तुम पूरा हिल डुल के वहाँ पे ऑलरेडी पहुँचे हो. एंड देन दे स्टार्ट डिगिंग, आई स्टार्ट फीलिंग द पेन, एंड देन क्वाइट लिटरली जस्ट लाइक ही सेड, उन्होंने मेरा हुडी भी जो था वो जिप वाला नहीं था, तो सरबा आके पीछे खोल के देखता है, एंड देन ही क्लिक्स अ फोटो ऑफ माई बैक विच इज़ नॉट दिस फोटो. He clicks a photo of my back and then he shows it to me कि this is what has happened. बोला okay. तो at that point I knew why this attack happened because I was totally low. मेरा ध्यान किधर भी नहीं था, उस जगह पे था ही नहीं. मेरा ध्यान था कि इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो, मैं जाके ज़रा सो जाऊँ, बस ये चीज़ पे मेरा ध्यान था और किसी भी चीज़ पे मेरा ध्यान नहीं था. So I knew why that attack happened on me. But then here it looks like I smoked. Some spirits told him I smoked. And actually that day, I'm a smoker. I won't deny. I am a smoker. But that day, I didn't smoke. Yeah. The attack that happened on me was not because I smoked and my consciousness got low or something else. It was just because I was too tired to even handle the beings of this physical world. ये दुनिया के लोगों को ही संभालना इतना ज़्यादा सरदर्द हो गया मेरे लिए कि मैं completely गिव अप कर चुका था मेरे बॉडी पे. आई वॉज जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग, ताकि मैं ये इन्वेस्टिगेशन मिस ना करूँ. सी व्हेन यू स्टार्ट एज एन इन्वेस्टिगेटर, जब आपको एक एक नया नया जगह के बारे में पता चलता है, यू आर ऑलवेज एक्साइटेड. आप ये नहीं देखते हो कि आप कितना ज़्यादा थके हुए हो, खाए हो कि नहीं, कुछ भी नहीं देखते हो. आपको बस पहुँचना होता है, सच्चाई जानना होता है, इन्वेस्टिगेट करना होता है. So that's quite literally what So happened. what about this image image that is used here? It is said that it doesn't look like it's your back, but No, I'm no foreign guy. इतना गोरा तो मेरा back है नहीं. I have back नहीं. Oh no, this is not my back. And he has been holding the camera all this while. There's no way he can put his hand and do that. True. So that happened, and I'm like, what did happen to you? Because I've been triggering. These both are digging, and we know the place, the history, and the psychic readings, right? Affected you. I just happened. Did you smoke now? And like, how did you know? I'm like, dude, the spirit told me right now with your body's reaction. And like, yeah, I did. This never feel happened. very This tired never and happened. all, so I had to Okay. do that to get that boost of energy. I'm like, you saw it. And the same guy got affected when we went to Roha Fort in Kutch. Same thing. He got affected. so what is this about the Roha Fort part? So Roha Fort. So while going to Roha Fort, the thing was, the travel was too much again. The person who is driving was Savio, and I was sitting beside, and all of them were there. रोहा फोर्ट का इन्वेस्टिगेशन काफ़ी सही है. रोहा फोर्ट जो है वही इतना ज़्यादा मैग्निफिसेंट है ना कि आप वो फोर्ट को देखते ही आपको एक बोलता ना, एक ऑव आ जाता है कि हाउ इतना बड़ा स्ट्रक्चर मेरे आंखों के सामने खड़ा हो लेकिन टूटा फूटा है, ये कभी भी मेरे पे आ सकता है. व्हाट वुड बी द हिस्ट्री बिहाइंड इट, ये क्वेश्चन मार्क आपको आता ही है बेसिकली. यहाँ पे भी सेम थिंग, बट हियर सी द थिंग इन रोहा फोर्ट इज we have traveled from Mumbai to Gujarat. So I have smoked, but I won't say, see, अगर वैसा देखा जाएगा ना कि every other investigation जहाँ पे मैं जाता है, before going to the investigation 5 to 6 hours ago, I will be at my home, मैं नहा के आता रहेगा, maybe I'll be having a craving. ऐसा रहेगा तो हर एक investigation में मुझे अटैक होना चाहिए था. Why didn't that happen? Makes sense. The weakest aura gets affected. It does. It always does. And I'm glad he's working on that now. But he got pulled by a spirit in Roha Fort in Kutch. Yeah, that's true. And after 5 minutes, I happened to be with him and I asked, were you smoking right before coming for investigation? They're like, yeah. How did you know? I'm like, The spirits spirits told me. So we have seen that happening.
like on what device? Okay. So what do you think about this thing that they said that were you attacked by the spirit, and like why did it happen? See, the attack on me was real. I won't say that कि वो कुछ नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है. But the reason behind the attack, I don't comply to that. Because I know, अभी देखो हर एक इंडिविजुअल का रहता है. अभी मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सामने किसी ने जिसने वो देखा रहेगा, मे बी फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू it may be look like कि I am having the weakest aura and that is the reason I got attacked. But then me being an individual investigator and researcher of my own, going over there वैसे एक जगह पे जाके देखो, अभी तुम काफ़ी टाइम से जब तुम ये फील्ड में हो तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर थिंग्स, Right. एंड देन इफ़ यू वांट टू डू थिंग्स, अगर ऐसा कुछ है कि इफ़ देयर इज़ कि अगर ये इंसान दारू पीता रहेगा या फिर इन्वेस्टिगेशन के पहले एक दिन पहले इसने दारू पिया तो इस पर पक्का अटैक होना चाहिए, ऐसा चाहिए ऐसा रहेगा तो भाई एवरी अदर ड्रंक शुड हैव बीन अटैक्ड, who because every other drunk, not every other drunk should be attacked, but every other person who is going to a secluded location, abandoned location to drink and all, ऐसा हर इंसान affect होना चाहिए. As we नहीं see, होता है. as we see in movies and series, अगर एक सुनसान रास्ते पे एक आदमी ऑफिस से आ रहा है, एक आदमी चल रहा है, एक बच्चा चल रहा है, एक स्कूल का बच्चा चल रहा है, अटैक तो उस पर भी होता है. किसी पे भी हो सकता है. अटैक तो उस पर भी होता है. So, See, the thing behind attack is, जैसे कि मैंने बताया, इट्स योर माइंड. तुम्हारा माइंड अगर स्टेबल नहीं है, तुम्हारा कॉन्शियसनेस अगर स्टेबल नहीं है तो तुम पे अटैक होएगा. सिगरेट फूकने से या फिर इंसान अगर एक दिन पहले दारू पिया रहेगा तो वो उनका कॉन्शियसनेस को अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स नॉट अफेक्टिंग. आई कैन टेल दैट बिकॉज आई एम अ स्मोकर. after this situation and incident, has like the situation repeated with you ever, like after that, like kabhi if you have been to a place and on individual basis were you attacked? No. Or were something like that has happened? No, Never. never. I have never been attacked. I have got the sense of danger. एक बोलते ना एक खतरा लगना कि अगर मैं एक स्पेस में गया, वो जगह पे गया तो मुझे लगता है कि हाँ ये इधर मुझे ये डोर के उस पर पैर रखेगा तो कुछ तो खतरा. Right. ये मुझे फीलिंग आया है, बट देन हाँ सेंस ऑफ फियर आया है, बट देन आई वेंट फॉरवर्ड बिकॉज दैट इज माई वर्क. वो सेंस ऑफ फियर को क्रॉस किए बिना अगर मैं इस साइड में रुक गया टेक लुकिंग एट द फियर तो मुझे पता ही नहीं कि उस बाजू क्या होने वाला है. Right. अगर मैं उस बाजू गया और उसके बाद जो भी होगा वो हैंडल करने को मुझे होना चाहिए. इफ आई हैव द कॉन्फिडेंस कि आई नो व्हाट इज देयर, आई नो what these beings are, what these spirits are, how may they react, how may they not react, are they demons, अगर demons है क्या या फिर just कोई human spirit है, क्या रहेगा अगर तुमको पता है. if you do research in a very बोलते ना, if you have a deep research about these things then you can go anywhere. It's your mind, it's your क्या बोलते हैं mental ability, the consciousness, जो अपना mental strength जो है, that is our biggest weapon. आपका ऑरा भी हो, anything. So do you think that whatever has been said in the video is 100% true? The attack, yes. Okay. Apart from that, I didn't know. and the back picture that they used, was it approved from you? Like were you asked that? Nothing was approved from me. I didn't even know. So when this episode got released, that's the moment I got a call from my relatives, and they started asking me things like, you are a person who does these things, you got attacked just because of like तुमने स्मोक करके गया, तुमको पता नहीं है ये सब जगह पे स्मोक करके नहीं जाना होता. नाउ जस्ट थिंक इट इन अ वे जहाँ पे मेरे मॉम डैड रिलेटिव्स मेरे फ्रेंड्स everyone is watching this thing. So that in that way it affected me, but then it was okay. They are my friends, they are my parents. I went there, I made things clear. उनको समझाया कि ये अभी एक शो है, ये एक पॉडकास्ट है, तो बताया गया है. एंड व्हेन आई हैड टॉक विद सरबा, उन्होंने मुझे बोला कि दिस वाज अ स्लिप ऑफ टंग, विच मतलब जो नहीं होना चाहिए था, एक स्लिप ऑफ टंग था. सो आई वाज लाइक अभी क्या ही, मतलब इट इज डन एंड डस्टेड. इट्स लाइव, इट्स डन एंड डस्टेड. इट्स 2 million views. Exposure for me also. So it's all good and done. So after this video that came out, when the video was live, how much time did you take to come out of this? Like कितना time लगा इसमें से recover होने में?
I क्योंकि would बहुत say लोगों ने 100 पूछा होगा ना हाँ, कि यार कि क्या आज हुआ? भी आता है अभी तो सी नाउ दिस वीडियो अभी वीडियोस कैसा है, इफ यू पुट समथिंग अप ऑन द इंटरनेट वो रहता है, अभी अगले हजारों साल के लिए वो वहीं पे रहेगा, एंड वो अगले हजारों साल में जितना भी लोग रहेगा, जितना भी लोग को समझा कि ये इंसान है, वो तो पूछेंगे ही मुझे, नो दैट्स नेवर गोना स्टॉप। बट जब एक इम्पैक्ट आया था स्टार्टिंग में कि अचानक से देर आर 5 to 6 पीपल, सी आई एम नॉट अ फेमस पर्सन, मैं कोई सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ, आई हैव ऑलवेज स्टेड अंडर कवर एंड बिहाइंड द कैमरा बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न मच मोर बिफोर आई कैन टॉक। आई शुड नो, मुझे पता रहना चाहिए Makes कि मैं sense, क्या yeah. चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये मुझे Yes, पता रहना yes. चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स तो मुझे पता रहना चाहिए, तभी मैं बात करूंगा। ये तो मैंने बोल दिया था, सो आई वॉज नॉट अ सेलिब्रिटी, बिग सेलिब्रिटी, या फिर आई वॉज नॉट अ नोन फेस इन इन्वेस्टिगेशंस और any other things. I was not a very known face, but the people who knew me closely, उनको तो पता है ना कि Yeah. this person is talking about And me. how old this incident is? This The Matheran maybe a year back, like we went to investigate Matheran. I think in 20. This happened all in 2021, 2022. After Oh, 2020. So is this the reason that you chose to be a freelance paranormal researcher and investigator? Uh, kind of, yes. This is also one of the reasons I chose to That be a triggered you freelancer. to do it on your own. Yeah, I can't say that it triggered me, that it showed me the path. All right, it was nice knowing your part of the story about this, what happened exactly. So now, with this, we'll end this video. Like, share, and subscribe to our channel. We'll come up with more interesting stories and experiences with more adventures.